विनियोग ओं प्रथमचरित्राणां ब्रह्मा विष्णु रुद्र ऋषिः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासृत्यो देवता व्याष्णि गणष्णु गायत्री उष्णि गणष्णु छंदांसी नंदा शाकंबरी भी महाशक्तिया रक्तका दुर्गा भरामरुर्वी जानग्नि वायु सूर्य सद्वानि ऋगुषु शाम वेद्या ध्यान कामना सिद्धि श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता प्रीत्यर्थे जपे न्यासे विनियोग ओम खड्गनी शूलनी घोरा कदनी चकनी संकनी चापनी बाणा भसुंडी वर्गांगुष्टाभ्यान वरदयन शूलेन पाहि नो दिवि पाहि खड्गेन चांबिके घंटा सुनेन नः पाहि चापज्ञानी शनेन चतर्जनी भ्यानमसरसे स्वाहा ओम प्राच्यां च प्रतीच्यां च चंडिके रक्ष दक्षिणे भ्राणोनात्म शूलस्य उत्तरसान्तदेश्वरी मध्यमा भ्यानमसिकाय वषटों सोम यानि रूपाणि त्रिलोक्ये विचरन्ति ते यानि चार्त्यर्थ घोराणि तैरश्मार्थस्वाभवम् अनामिका भ्यान कवचायं खड्गशूल गदादीनि यानि च श्राणि त्यम्बिके करपल्लव संगिनि तैरस्मा रक्ष सर्वदा कनिष्ठिका भ्यामनं नेत्रतरः वषट् ओम सर्वरूपे सर्वेशै सर्वशक्ति सर्वविधे भैवस्त्रायिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते करतलपृष्ठाभ्यानमास्त्राय फट् हस्तप्रक्षालनं ध्यानम् ओं विद्युद्धाम शमप्रभां मृगपति कन्दस्थितां भीषणां कन्याभिः करवालिकेटविलसद्दस्ताविरासेवितां हस्ते चक्रगदासिकेटविसिकाश्चापं गुणं तर्जुनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे श्रीजगदम्बिकाय नमः ध्यानं समर्पयामि। श्री दुर्गाय नमः विनियोग ओं प्रथम तरस्य ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंदः नंदः शक्तिरन्तिका बीजम् अग्निस्तत्त्वमर्गवेदः स्वरूपं श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथम चरित्र जपे विनियोग ध्यानम् ओं खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलं भुसुण्डीं शिरा शङ्खं सन्धदतिं करे स्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशिकां सेवे महाकालिकां यामास्तुत्सपिते हरो कमलजो हन्तुं मधुं केटवं जगज्जन्ये नमः महाकाले नमः ध्यानं समर्पयामि। ओं नमश्चण्डिकाय ओं ऐं मार्कण्डे वाच सावर्णे सूर्यतनयो यो मनुगततेष्टमहानिशामपत्तिं विस्तरात् गतो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तरादिपः सा बभूव महाभागः श्रावणीस्तनयोरवे स्वारोचन्दरे पूर्वं चैत्रवंशा समदोभा शरदो राम राजा भूषमस्ते चितिमण्डले तस्य पालतः सम्यक् प्रजापुत्राणि वोरुषान् बभूः शत्रुभूपाकोलाविधुवंशिनस्तदा तस्य तेरवद्युद्धामतिपर्बलदण्डिनः न्यूनरविधतेरुद्धे कोलाविधुवंशिभिर्जितः तथा शुप्रमायादौ नित्यदेशाधिपो भवत् आक्रान्तश महाभागस्ते सदा प्रबलार्भिः अमात्यैर्बलदृष्टे दुर्बलस्यादुराद्भिः कौसुबलं चाविदरं तत्रापि स्वपरे तथा ततो मृगया व्याजेन हृतुमाशत् भूपति एकाक्यं हारुया जगमहगहनवनं सा तत्राश्रम मद्राक्षे द्विजुवर्षमेधशा प्रशान्तशवदः किरणं मुनिशिष्योपशोभितं तस्थो कञ्चित्कालं चामुनिना तेन सत्कृता इतस्येतच्च विचरस्तस्मिन् मुनिवराश्रमे शोचिन्त तथा तत्र मम त्वाकृतचेतनः मत्पूर्वे पालितं पूर्वं मया हीनं पुरमिदत् मत्प्रीत्यस्ते सर्वते धर्मतः पालतेन वा न जानेश प्रधानो मे शूरहस्ति सदा मदा मम वीर्यशं व्याहता कानभोगान् लप्स्यते यमानुगतं नित्यं प्रसादधन भोजने अनुवृत्तं ध्रुवं ते त्याग कुर्वन्ति निर्महि वृताम् असम्यग्विषयस्ते कुरोद्वि सन्तितं वयं सञ्चितः सोति दुःखेन क्षयं कौशो गमिष्यति एतच्चानिषु सन्त्या चिन्त्यामास पार्थिवा तत्र विप्रासमभ्यासे वेषमेकं ददर्शा सा पृष्ठतस्तोम्भो हेतु शागनमातृगः ससौविकस्मातं दुर्वना विलक्षसे इत्याकनवचस्तस्य भूवते प्रणयोदितं प्रतिवाचस तं वेश्या प्रशयवानतो निर्भं वेश्योवाच समाधिनां वेश्यो हमुत्पन्नो धनिनां कुले पुत्रधारेस्नतस्य धनुलोवादशादुभिः विहीनस्य धनेरादे पुत्रे राजाय मे धनं वनमप्य दुःखी निरस्याब्दबन्धुभिः सौम्नवहिनी पुत्राणां कुशलात्मिकां परिवृत्तिस्वजनानां च धाराणां च दृष्टा किं नु तेषां गृहे क्षेमं क्षेमं किं नु शाम्प्रतं गतं ते किं नु सद्वृता दुर्वृतः किं मे श्रुतः राजोवाच येन रास्तो भवालुधे पुत्रधाराद्वृतनेः तेषु किं भवदायिष्णामनुबध्नाति मानसं देश्योवाच एमेतद्दाप्राह भवान् गतं वचः किं करोमि न बध्नाति मम निश्चितं मनः ये सत्यच विधिष्णं धमलुब्धेर् निराकृतः पति स्वजन हार्दं च हार्दितेषु मे मनः किमे तन्नाभि जानन्नभि महामते यत् प्रेमव्रणं चित्तं विगुणेषु बन्धुषु तेषां कृते मे निःश्वासो धर्मणं जायते करोमि केवलस्तेष्व प्रीति सुनिष्ठुरं मार्कण्डे वाच ततस्तौ शयितो विप्रात्तमुनिषमुपस्थितो समाधिर्नाम वैश्यो शचितो पार्थिवशत्तमा कृत्वा तु निधारं यथारमतेन संविदम् उपविष्टो कदाकातिष्ठकुरुद्रवैश्य पार्थिवो राजोवाच भगवस्तामं पृष्टुम् इच्छामि कवद सदत् दुःखायेन मे मनसा सुचितां विना मम तं गतराजस्य राजङ्गेषु क्लेषु विजानुद्विधागस्य किमेतन् मुनिषत्तमा अयं च निकृता पुत्रे धारय प्रतिजोजिता स्वजने च सत्यस्तेषु हार्दि तथाप्यदि एवमेषु दाहं च द्वापत्यखन्तु दुःखितो दृष्टदोषोऽपि विषये मम त्वाकृष्टमानसो तत्किमेतन् महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममाश्रितो भवेतेष विकान्दस्य मूढता ऋषिर्वाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जद्दोर्विषयगोचरे विषयस्य महाभाग याति चैवं पृथक् पृथक् दिवादः प्राणिनः केचित् रात्र बन्धस्था परे केचित् दिवादता रात्रो प्राणस्थूलदृष्टया ज्ञानिनो मनुजः सत्यं किं तु तेन हि केवलं यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगादया ज्ञानं तदन् मनुष्याणां यतेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यतेषां तुल्यमन्यतो वयो
ज्ञानभिसति पश्येतान् पदाङ्गावचञ्च सुकर्णमोक्षार्थतः मोहात् पीडा माननपि जुदा मानुषा मानजव्याघ्रा शाभिलाषा शुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नान्यविधा किं न पश्यसि तथापि मम तावरते मोहगर्ते निपातितः महामाया प्रभावेण संसारस्थितिकारिण तन्नात्रिषमया कार्यो योगृद्रा जगत्पते महामाया हरिशेषा तय्याः सम्मोहेते जगत् ज्ञानिनामवे चेतांसि देवी भगवती सा प्रादाकृष्यमोहाया महामाया पर्यच्छति तया विश्रिते विश्वं जगते चराचरं शेषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये सा विद्या परमामुक्तिर्हेतुभूता सनातनी संचारबन्धे हेतुश्च सेव सर्वेश्वरेश्वरी राजोवाच भगवन्कायिषा देवी महामायेति या महान् परवेति कथमुत्पन्ना स्याकर्मस्य किं दुजा रथप्रभावा च सा देवी यत्स्वरूपयतुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि ततो ब्रह्मविदां वरा ऋषिरुवाच नित्येव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वेदं ददं तथापि समुद्बधिर्बहुधा श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थमाविर्भवति शायदा उत्पन्नितदालोके स नित्यविधीयते योग निद्रां विदा विष्णु जगति कर्णवी कृते आस्तिरस्य भजत् कल्पान्ते भगवान् प्रभु तथा दावशरो घोर विख्यातो मधुकेटभो विष्णुकर्मलोमलोद्भूतो हन्तुं ब्रह्माण्डमुद्यतौ सा नाभिकमले विष्णु स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वा तावसरो चोग्रो परसुतं च जनार्दनं तुष्टापयोग निद्रां तमयकृतस्तदा विबोधनहार्थ हरिनिर्कृतालयां विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं विस्थित संहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णु अतुलां तेजसा प्रभु ब्रह्मोवाच त्वं शाह त्वं सदा त्वमिह षड्कारः स्वरात्मिका सुधातमक्षरे नित्यतीर्धा मात्रा स्थिता अर्थमात्रा स्थिता नित्यायानुचार्या विशेषदा त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वेतद्धार्यते विश्वं त्वेतत्सृजते जगत् त्वेतत्पाल्यते देवी त्वमसन्त्येष सर्वदा विशिष्टोचिष्टरूपा त्वं स्थितरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोह च भवती महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रि सदारुणा त्वं श्री त्वं ईश्वरी त्वं हरिस्वरबुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जापुष्टि तथा तुष्टि त्वं सहन्ति चान्द्रेवुजा खड्गनी शूलिनी गौरा गदनी चक्रिणी तथा शङ्किनी चापनी बाणा भुसुण्डी परिगायुधा सौम्या सौम्यतरासेचा सुमतिसुन्दरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् वस्तु सतसत्त्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं युस्ते तदा यया त्वया जगत्सृष्टा जगत्पातिर्यो जगत् सोऽपि निद्रां संनीता कस्तव महेश्वरा विष्णुः शरीरग्रहणामहमीशान एव च कारितास्ते दोषस्तं कः शक्तिवान् भवेत् शातवित्तं प्रभावे शिवदारदे विष्णुस्तुता मोहयितो दुरादर्शा वशरो मधुकेटवो प्रबोधं च जगत्स्वामी नियतामुच्यतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतो महासुरो ऋषिरुवाच एवं सदा तथा देवी तामसी तत्र वेदशा विष्णुः प्रबोधनार्थः नियं तु मधुकेटवो नेत्रस्य नासिका वायुहृतभिस्ततो रसा निर्गम्य दर्शने तस्थो ब्राह्मणो व्यक्तजन्मनः उतस्थौ च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दन एक कारणविसेना तथा दो मधुकेटवो दुरात्मानादिवीर्यपराक्रमो क्रोधरक्ते क्षणावन्तं ब्रह्माणं जनितो धमो समुत्थात तदभ्यां विभूते भगवान् हरि पंचवर्षसहस्राणि बाहुप्रणो विभूतापितुलोन्मत्तो महामाया विमोहितो उक्तवन्तो वरश्मत्तो प्रियतामिति केशवं श्रीभगवान् उवाच भवितमदमे तुष्टो मवध्याभुभावपि किमन्येन वरेणात एतावृतं मम ऋषिर्वाच वाञ्छिताभिमिति तदा सर्वमभवं जगत् विलोक्यताभ्यां गतो भगवान् कमलेक्षण आवां जहिन यत्रोर्विसल्लेन परप्लुता ऋषिरुवाच तथेयुक्ता भगवता शङ्खचक्रगदावृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जगने शिरसीतयोः एवमेषा समुत्पन्ना भ्रमणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः शृणु वदामि ते ऐं ओं जय जय श्रीमार्कण्डेयपुराणे श्रवणिङ्गि देवी महदेव प्रथमा ओं तत्सजगदम्बार्पणमस्तु